वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ मियां अदनान और जियाउर रहमान। आप सब लोगों को अगेन वेलकम कहते हैं इस यूट्यूब चैनल जियाउर रहमान सर के, क्योंकि ही इज द होस्ट एंड आई एम द को होस्ट ओवर हियर। एंड चाहे दुनिया की जिस भी कोने से देख रहे हैं, ये हमारी दुआ है कि आप एक हंसती मुस्कुराती सेहत वाली खुशियों वाली जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो। और एज ए पीपल नो कि हमने एक रिएक्शन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम इन्फो एजुकेशन कंटेंट है उस पर उससे सीखते हैं। सीखने का एक अमल हमारा जारी है। हम हमारा जो बैकग्राउंड है वो मीडिया स्टडीज से है और हम चाहते हैं कि हम जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करें और उसके साथ साथ जो हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो Yes. हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और इकोनॉमी किस तरह चल रही है इस खित्ते की या वेस्टर्न इकोनॉमी के कंपैरिजन में थर्ड वर्ल्ड किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, Yeah. उसको समझने की कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की तरफ जाएं, हेल्दी डिबेट और पॉलिटिकल डिस्कोर्स देने की कोशिश करें। यहाँ पे इस चैनल का मकसद यही है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो आज का टॉपिक है उस पर बात करना शुरू करते हैं जल्दी से। जी बिल्कुल। जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम कुएं के मेंढक ना रहें, थोड़ा सा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उस पर और लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव, लोग किस तरह से सोचते हैं और वो हमसे मुख्तलिफ किस तरह, और हमारे कॉमन पॉइंट्स क्या हैं ताकि उन कॉमन पॉइंट्स पे हम इकट्ठा हो सके। आज हमारे पास जो एक है वो नया चैनल, इस पे हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में इस चैनल से। और मैंने इनकी पहले कुछ वीडियोस पर रिएक्ट किया था। मेरा जो दूसरा चैनल था एडम मियां अदनान, जो कि अब व्लॉगिंग चैनल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अच्छा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस चैनल आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है। आपने ध्रुव की भी पहली ख्याल में 2 वीडियोस पर रिएक्ट किया है। Yes. अभी तक नीतीश राजपूत की किसी वीडियो पर रिएक्ट नहीं किया आपने। होपफुली ऐसा आप एक्सप्लोर करेंगे। दे आर ब्रिलियंट कंटेंट क्रिएटर। और ये लड़का जी यंग है वेरी, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड एक तो पढ़ाता भी है। इनका प्रॉपर अब इंस्टीट्यूट बन चुका है, थिंक स्कूल, ये यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और इस बंदे का जो समझाने का अंदाज है वो भी बहुत बढ़िया है। चलिए फिर बगैर किसी देरी के मेरे ख्याल में टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो के पास, वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हाउ अदानीज जीनियस स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज मेकिंग इंडिया पावरफुल, बिजनेस क्लास केस स्टडी, बिजनेस केस स्टडी। यस। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा और कि वहाँ ऑलरेडी 2 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ठीक है, और अंबानी। और ये जो अडानी ग्रुप है इसने तो बहुत ज्यादा तहलका मचा के रखा हुआ है एकदम से और बूम पकड़ा एकदम से, बहुत ऊपर गए। कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं क्योंकि मोदी बहुत सारे स्कैंडल्स हैं और फिर मोदी साहब के साथ दोस्ती इन लोगों की और ये बड़ा मसाइल रहे और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। चले देखते हैं कि बिजनेस क्लास समझते हैं कि क्या उन्होंने क्या अपना रोल अदा किया है इंडिया की इकोनॉमी को एलिवेट करने के हवाले से। तो प्लीज चले आप स्टार्ट करें। Hi everybody. The Adani Group is one of the most powerful business houses in the country. One of the country's largest business empires. Adani Group companies. Adani Group's market capitalization has jumped over 76,000 crores. And more importantly, the Adani Group has been a major contributor to the economy of India because they have transformed the way Indian ports operate and compete in the international market. Whenever he speaks about his group, he always says that his conglomerate's goals are aligned to India's goals. By 2030, what we are targeting to do is to be largest port company globally, and also from an India perspective to be the largest transport utility. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months, $1 which is yes. the belief. Objectives are very clear. That keeps the Adani Group going. And now, the Adanis, the state government of Kerala and the central government of India are coming together to build something called a deep water transshipment port in India. New Adani Megaport can lure world's biggest ships to India, located near the southmost tip of the country. Construction of a multi-million dollar port in India's southern state of Kerala. And this project is the Visinjam port in Kerala. Visinjam port will emerge. Kerala is a great state over there. Yes, very beautiful. Yes. Huge revenue contributor to the state. And this project is such He a is not massive holding project the that mic, it but costs more than yes. 7,600 I love his way. At the same time, it is so revolutionary. I think he has a that smaller once mic. built, Yeah, this smaller port mic, would but still he is single-handedly just- reduce export costs for Indian traders. It will decrease the time to export our products to the world, and most importantly, we could be standing up to the standards of the biggest players in the port business, which includes the Singapore port, the Colombo port, and even the iconic Jebel Ali port of Dubai. So, as students of business, this is one of the most important economic developments of India that you need to be aware of. So, in this episode today, let's do a deep dive into the port industry of India and understand what the heck is a transshipment port,
why does India need a transshipment port now? How will it help the traders of India? And most importantly, how will it impact the economy of India? Okay, here we go. अब एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड था. Yes. So as usual, let's start with the basics and first try and understand what exactly is a transshipment port and how is it different from a normal port. So let's say a trader from Germany requires 2000 electric motors from a trader in Mumbai. So the trader in Mumbai approaches a shipping company and this shipping company offers him two options. The first option is a direct service whereby the motors will be shipped in a medium-sized vessel from Mumbai to Germany via Suez Canal. Now this ship only stops for refueling at multiple stops like the Jebel Ali port and the port of Gibraltar. This is called as the direct service option. The second option is the transshipment service option. In this service, first the goods will be transported from Mumbai to Jebel Ali port in Dubai using a small ship. Then at the Jebel Ali port, the goods will be transferred to a large ship that's heading to Germany. This large ship collects goods from many such smaller ships to ship the goods to Germany. So in this scenario, the Jebel Ali port serves as the transshipment hub which helps the motors go from a small ship to a large ship. And even though the cargo is making an additional stop, the overall cost of the delivery is reduced drastically. And this gives one major advantage to the traders, which is enhanced efficiency and economies of scale. And this is where you need to understand the concept of something called TEU. For those who don't know, TEU stands for 20-foot equivalent unit. So it's basically the volume of a 20-foot container. And this container is something that you must have seen in the highways. TEU. So coming back to the story, when large container vessels carry more than 10,000 TEU, it provides a cost saving of at least 30% per TEU as compared to the smaller vessels which carry less than 4,000 TEU. This is the reason why transshipment hubs are very useful and very important for trading. And if you look at the major transshipment hubs across the world, they are located in Singapore, Shanghai, Busan and Dubai. In fact, China alone has more than 6 transshipment hubs in its country. Whereas if you look at India, we have 0 transshipment hubs. And because of this, 62% of our transshipment cargo is handled by other ports like Colombo, Singapore and Jebel Ali. And Colombo alone handles 16% of India's container transshipment cargo, which means when the goods come from abroad to India, they stop at the Colombo port, and from the Colombo port, smaller ships bring our goods to India. So even while the goods are coming to India, we have to depend on Colombo for the transshipment service so that the goods can arrive to India, because Indian ports do not have the capacity to dock larger ships. This is how we are dependent on other ports for handling our cargo. At present, over 80% of India's transshipped cargo gets into the country through Colombo and Southeast Asia, costing New Delhi over $200 million annually. Now the question that you might ask is, when there are so many transshipment hubs in Singapore and Colombo, then why is there a need to build a transshipment hub in India? Is it not a waste of money and resources? Because if you look at the cost, it's costing us more than 7,000 crores. Well, this is exactly what even I was wondering about. And when we looked deeper, we found 3 reasons why India needs its own transshipment port. The first reason is cost. In short, when we use other countries' transshipment ports, it costs us precious foreign exchange and it's very, very expensive. This cost goes up to $200 per TEU of cargo. So Indian ports lose up to $200 to $220 million of potential revenue each year on transshipment handling of cargo, which is either originating or destined for India. So if a transshipment hub is built in India, it is expected to save 1,000 crores per year. Secondly, instead of depending on other countries for our transshipment service, we can actually start giving out these transshipment services to other countries, eventually making dollars instead of paying in dollars. And lastly, if there is a diplomatic tension with a country like Sri Lanka or Singapore, India's trade will be in danger. So even if we assume that we will always have friendly relations with Sri Lanka, with increasing Chinese influence with the Belt and Road Initiative, it is still a security threat. Guys, while editing this video, I found a classic example of how the lack of transshipment hub is actually paralyzing Indian trade. So I thought I should let you know. So I was reading this Mint article which is speaking about Sivkasi, which is the powerhouse of fireworks in India and produces about 90 to 95% of the fireworks in India. Here it says that Indian fireworks have a great reputation abroad, especially the fireworks that come from Sivkasi, and they do get a lot of orders from countries like Russia and Poland. But the catch over here is that these shipments cannot be directly shipped to Russia and Poland
and they have to be routed via Colombo because we do not Okay. have ports which can berth large ships. So we have to use smaller ships. We have to send those goods to Colombo, and from there onwards, a larger ship takes it to these markets. But the sad fact of all is that these large ships are Chinese ships and they refuse to take up Indian fireworks cargo. Why? Because they have a 45,000 crore market. So, in spite of having huge opportunities in the international market, we are not able to tap into these opportunities because we do not have a transshipment hub. And the fun fact is that China has a 45,000 crore export market for fireworks. So, even if we are able to scrape out 15% of the market for ourselves, we will be able to double the size of our fireworks industry. This is the example that I found which helps us understand how the lack of a transshipment hub is paralyzing us. And I just thought I should let you know about this. And now, back to the episode. This is the reason why Good improvisation. the Kerala government, the central government, and the Adani group are building a transshipment hub for India. Now, another question that popped up in our mind is why aren't we using ports like the JNPT port or Mundra port as transshipment ports? Because building a new transshipment port is costing us so much money. So, why aren't we actually developing our existing ports to become transshipment ports? So, what exactly is so special about this Visinchum port that we are specifically developing a transshipment infrastructure for this particular port? Well, as it turns out, there are two very unique features of the Visinchum port that makes it ideal to be India's transshipment hub. Now, if you watched our Maldives episode, you already know how sea lines of communication are the important highways in the ocean and the most important sea lines of communication in the world, which connect east and west, pass below South India. And if you look at the location of this port, it's just 10 nautical miles away from the international shipping route which connects Europe, the Persian Gulf, and the Far East and accounts for Okay. 30% of the world's trade. So this will allow ships to dock quickly without diverging too much from their itinerary. So this way, Visinchum has the perfect potential to compete with leading global transshipment ports like Colombo, Singapore, and the Jebel Ali port. So this way, Visinchum has the perfect potential to compete with the Colombo port. Secondly, the natural features, especially the depth of this port, is just too perfect. So if you've read about ports, you know that large ships require deep ports to dock. So the deeper the port is, the bigger the ship it can accommodate. Now the problem with Indian ports is that we do not have enough deep water ports. So while large vessels range from 14,000 to 18,000 TEU, if you look at Chennai, it can only handle a maximum of 5,000 TEU of ships. Kochi can handle only 4,500 TEU, Mundra can handle 8,000 TEU, and JNPT Mumbai can only handle 6,500 TEU of ships. And to make matters worse, in the next 10 years, the average size of ships will be around 12,000 to 15,000 TEUs. And today, it stands at only 6,000 to 8,000 TEU. So if we don't upgrade our ports won't be useful at all. So Visinchum is perfect for some of the world's largest ships because it has a natural waterway that can be expanded to 24 meters below the sea. But until now, large ships have avoided India and have docked in Colombo, Dubai, and Singapore because of their depth and their facilities. But now, Visinchum can handle 20,000 to 24,000 TEU ships, with ships as long as 400 meters in length. 400 meters. And this makes it the only port in India that can handle such large vessels. This is the reason why Visinchum port is perfect to become a transshipment hub for India. And lastly, there is no littoral sedimentation in this port. For those who don't know, littoral sedimentation is the process of sediment deposition or erosion which occurs along the shore. So once these sediments settle down, they have to be dredged out to make these ports usable for the ships. And this process of dredging is such an important cost factor that if you look at Mumbai, the cost of dredging the harbour has shot up by 154% in the last decade. So as this cost increases, the cost of maintenance of this port also increases by a large extent. And if you look at the annual dredging cost of the Mundra port, it is 450 crores. And the annual dredging cost of the Vallarpadam port in Kerala is 110 crores. But if you look at the Visinchum port, this sedimentation is very less in this port. So again, the dredging requirements are low, eventually leading to less cost of maintenance. These are the reasons why the Visinchum port is the best place to build a transshipment port in India. So now the most exciting question of all is, if this port is built in India, then how will it affect the Indian economy? Well, firstly, it is estimated that once this port is fully operational by 2025, it will provide 15,000 jobs.
Okay. Secondly, India will become a transshipment hub, making our exports cheaper, and it will boost our manufacturing. Yes. Thirdly, if you look at the India-China comparison, India's container traffic was only 17 million TEUs in 2020, whereas if you look at China, they stood at 245 million It's a TEUs. huge difference. So this port will allow India to grab a bigger pie of the global maritime trade, which is currently dominated by China. And once phase 1 becomes operational, the Vizhinjam port is projected to handle 1 million TEUs, and in subsequent phases, it will handle another 6.2 million TEUs. And this will make up 70% of India's current transshipment. Fourthly, Indian exporters will not have to travel to Dubai or Singapore for transshipment of cargo, and they are expected to save thousands of crores in their expenditure. And lastly, the Vizhinjam port could boost India's sustainability ambitions. So when completed, the port will be one of the greenest ports in the world. So it can become a hub which supplies clean and green fuel like hydrogen and green ammonia. This is the story of India's transshipment ambition. Now, the only problem over here is that this project was started in 2015 and was to be completed in 2019. But due to Okay. COVID and the Russia-Ukraine war, its completion has been postponed. And as we saw from the highway case study, this delay in infrastructure project costs us both in terms of higher material cost as well as economic output. So now what remains to be seen is how will the government fast track the completion of this port and strengthen the trade of India. This is the story of the challenges, the developments, and the reasoning behind India's transshipment ambition. And I just hope you learned something valuable from this case study. Yes, That's all we from my did side learn. today, guys. We Now you did will have a learn. look at all the study materials in the description. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button in order to make YouTube Baba happy. And for more such insightful business and हाँ जी, आज हमने बिजनेस केस स्टडी और एक चीज मुझे आइडिया हो रहा है, जो चीज़ें रिलेटेबिलिटी है। आपकी जेब में जब पैसा होता है ना, आपका दिमाग बहुत काम करता है। बहुत काम करता है। यस, इंडिया ने प्लानिंग्स की, उन पर काम किया, अपने मुआशी हालात बेहतर किए। अब वो जब आप वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हो तो आप वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट भी लेके आते हैं। क्या होता है? और आप ये देखें कि जिस तरह ये बात है कि आपका प्राइवेट सेक्टर आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ये अडानी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारा, अगर हम पाकिस्तान के कंपैरिजन में ये देखें ना, हमारा तो प्राइवेट जो है वो इंडस्ट्री की तरफ कभी नहीं जाता, वो जाएगा एजुकेशन की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट भी सेफ खेलते हैं और हम लोगों ने कभी प्रमोट नहीं किया बिजनेसमैन को, और ना उनके लिए पॉलिसीज कभी अच्छी बनाई। तो यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए बहुत ज्यादा है इस वीडियो से। और ये काश के ये वीडियो जो है, इनका बहुत शुक्रिया इनका जिन्होंने ये वीडियो बनाई। काश के हमारा कोई पॉलिसी मेकर्स भी ऐसी वीडियोस देख लें। एग्जैक्टली। और हमारे पास तो नेचर ने इतना गवादर है। यस, वी हैव द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पोर्ट। वो बात यही कर रहे हैं कि यार हम लोग बड़ी शिप्स हम लोग पोर्ट नहीं कर सकते, वहां पे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास तो नेचुरली इतनी डीप, दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट तो हमारे पास है। और हमारे पास 812 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। आपको याद हो, मैं और आपकी पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, कोस्टल लाइन इतनी ज्यादा है, आप उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप विंड एनर्जी बनाए, पावर प्लांट लगाए उनके। I don't think so कि power plant is a suitable word. पावर प्लांट है, विंड एनर्जी Wind energy power plant, okay. ऐसा मुझे एकदम से माइंड में लगा कि I'm just using a wrong terminology. नहीं, that's a very right terminology मियां साहब। The thing is, हम लोग यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे। हमारे पास कराची पोर्ट कासिम के अलावा कोई इस टाइम पे एक्टिव पोर्ट भी नहीं है जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हो। और सबसे मजे की बात भला क्या है, हमारे पास पूरी कंट्री के अंदर नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है कि हम कंट्री से भी ट्रांसपोर्ट वाटर के जरिए कर सकते हैं। वी हैव दैट मच पोटेंशियल, बट हम लोग सीखना नहीं चाहते। काश के मेरी तो दुआ, मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बट आई एम सैड फॉर माई कंट्री राइट नाउ कि हम लोगों के पास ना ऐसा कंटेंट देने वाले लोग हैं और ना ऐसा कंटेंट सुनने वाले लोग हैं, और ना हमारे पॉलिसी मेकर्स ये चीजें सुन के समझ के कर रहे हैं, या शायद वो समझना चाहते नहीं। Ignore, डम बने हुए हैं सर। दे आर नॉट दैट डम। वो अपनी किकबैक्स के लिए, अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मोदी सरकार से सीखने की जरूरत है इकोनॉमिकली। ओके, इन दोनों कंट्रीज ने इट्स टाइम फॉर पीस। इन दोनों कंट्रीज ने हमेशा डिफेंस वॉर लड़ी। यू स्पेंट इट ऑन डिफेंस। वो हम लोगों ने, आप न्यूक्लियर कंट्री बने, हम लोगों ने न्यूक्लियर अटैक कर वो यहाँ पे बम फाड़ दिए, ये हो गया वो गया, मतलब हम लोग एक दूसरे को डिफेंस में करते रहे टैकल। बट इट्स टाइम के पाकिस्तान स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इंडिया। In the entire country, they did not even mention Pakistan. हम उनके करीब भी नहीं है। They did their comparison to China. और they are very right to do that.
दे हैव एवरी राइट टू डू दैट बिकॉज इस खित्ते में इस टाइम पे दो कंपेटिटर हैं, वो चाइना और इंडिया है। चाइना इज लीडिंग राइट नाउ, बट द वे इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। इट कुड बी वेरी बिग यार। आई एम वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस। और सबसे बड़ी बात ये, आई एम सैड कि इवन इफ वी गेट रिच ना, हम इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। वी गेट रिच, हम नहीं पाकिस्तान में। प्रॉब्लम्स ही बहुत है ना, कोई एक चीज भी, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आप यार आप बिजनेसमैन को सपोर्ट ही नहीं करोगे तो किस तरह वो इन्वेस्ट करेगा। इवन दो हमारे तो जो लीडरान हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो रहे हैं वो सारे खुद बिजनेसमैन हैं। दे डिड नॉट इवन थिंक कि हम लोगों को ट्रांसशिपमेंट इंडस्ट्री चाहिए। हमारा शिपिंग यार्ड तबाह किए भुट्टो साहब के दौर के अंदर तबाह हुए, नेशनलाइजेशन के अंदर। वी वर गोइंग गुड इन 70s, टुवर्ड्स द लेट 70s वी वर डूइंग वेरी गुड। हम लोग अच्छा जा रहे थे, एंड बाय फॉर एनीवन कैन चेक द रिकॉर्ड, इन 70s वी हैड द बेटर शिपिंग इंडस्ट्री देन इंडिया। ऐसे ही है। But- वो एक दौर था जब इंडिया पाकिस्तान के प्लान्स, और इवन सिंगापुर ने पाकिस्तान के वो जो 5 years प्लान थे देख रहा था, बट इंडिया ने अपनी डायरेक्शन 1990s में मुतय्यन कर ली कि हमें किस तरफ मतलब एवरी क्रेडिट गोज टू मनमोहन सिंह, एग्जैक्टली द लीडर दे हैड। हालांकि वो अंडररेटेड है मेरे ख्याल में, क्योंकि Credit अभी कम दिया मोदी जाता है साहब ने आके उसके दौर का मोदी बहुत बड़े विजनरी निकले ना। हम लोग तो अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक पर्सपेक्टिव था कि मोदी कैन नॉट डू एनीथिंग, मोदी He's gonna destroy India and मोदी blah, की वजह blah. से ये हो जाएगा। मतलब हम लोगों को मीडिया वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से ये पढ़ाया गया। बट द मोर वी लर्न, जिस तरह मेरी उम्र और जिस तरह मेरा एक्सपोजर बढ़ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसको मैंने फजूल आदमी समझा वो तो बहुत बड़ा विजनरी था। मोदी बहुत बड़ा विजनरी लीडर है। वो निकल के घास की यार Yes. देखो, वो उसकी जर्नी देखो ना। Yes. आप यहाँ बिलावल जैसे, अब हाँ क्या बात मतलब करें? हमारे पास ये है ना कि सेठ का मरियम बच्चा सेठ आपकी है। मतलब पॉलिटिकल ग्रोथ भी नहीं हुई ना यहाँ पर। कोई ग्रोथ होती है तो वो आप जेलों में डाल देते हो। अभी भी एक बंदा थोड़ा सा उसकी स्ट्रगल थी, वो कहीं ना कहीं मुल्क को डायरेक्शन देना चाहता था, उसको फिर आपने जेल में डाल Yes, दिया। और कुछ नहीं तो वो ये डायरेक्शन तो दे रहा था कि हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कुछ करना है। और दैट्स अ बिग थिंग यार, दैट्स अ बिग थिंग। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अवाम से गुजारिश है कि यूज क्लीन रिसोर्सेज, प्लास्टिक यूज बंद किया जाए, कम से कम प्लास्टिक वेस्ट किया जाए। यहाँ पे ये मैं अपना जाती तौर पे ये एक जज्बात रखना चाह रहा हूँ कि प्लास्टिक वेस्टेज से हम मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान हम दोनों को होगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता क्लाइमेट चेंज के नुकसान होते हैं तो सबसे ज्यादा केरला, उसके बाद कराची, हम दोनों अफेक्ट होंगे, हम दोनों कंट्रीज अफेक्ट होंगे। यूरोपियंस का कुछ नहीं जाना, दे हैव यूज्ड एवरीथिंग, they have used the green budget, carbon budget of the world, but we will suffer. We have to make changes and we have to go for clean energy. And clean उन्होंने energy, बात भी की। yes, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट की उन्होंने बात की। क्लीन एनर्जी की बात हम लोग कर ले, हमारे पास तो नेचुरल वाटर फ्लो है, हमारे पास इतना बड़ा यार एरिया है, कोस्टल लाइन है, बट वी कुड नॉट डू एनीथिंग। सो हैप्पी फॉर द इंडियंस यार, सो हैप्पी दैट दे गॉट लीडर्स एंड सो हैप्पी दैट दे आर डूइंग इट एंड दे आर हैविंग कंटेंट क्रिएटर लाइक दीज, जो देखो ना, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपको बताया जाए कि आपकी ओर की डायरेक्शन, ये होप पैदा करती है लोगों में, और ज्यादा उनको वर्क ओरिएंटेड बनाती है। Yes. उनकी एनर्जी में इजाफा करती है। अब पाकिस्तान में जो यूथ है वो क्यों थोड़ी सी, क्योंकि कुछ भी ऐसा उन्हें नहीं रोड, मतलब ऐसी चीज नहीं दिखाई जा रही कि यार कोई बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। ब्रेन ट्रेन हो रहा है हमारा, तो हम तो निकल रहे हैं हमारे जितने, मतलब इवन अगर यहाँ पे हमारे पूरी क्लास में वी आर डूइंग एमफिल, कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है? सब जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, और ब्रेन ड्रेन इस कंट्री में हो रहा है। और ब्रेन ड्रेन इस वजह से हो रहा है, हमारी पॉलिसीज खराब Policies वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडिया, एंड थैंक्स टू दिस गाय यार, थिंक स्कूल, व्हाट अ प्रोजेक्ट ही इज having, or what a way to describe a thing. Even though he is using a language that is very foreign to us and very alien to us as a public, but still he did very fine. उसकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो उसके मुताबिक वो कर रहा है, और very defined Obviously, target audience. बहुत जो एक यंग जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन है, जिसको वो लैंग्वेज डिकोड करना आते हैं, उसके लिए उसका कंटेंट, उसकी टारगेट ऑडियंस बहुत क्लियर अच्छा, है। as a Pakistani and as a media producer, I always thought, as a content producer, even on social media, I always think कि हमें bilingual रहना चाहिए। Yes. उर्दू और इंग्लिश का जरा सा मिक्सचर करके हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि हम ये दोनों जबानें साथ साथ लेके चल सकते हैं। मतलब having too much tilt towards a single language will cause some disturbance and will cause tilt in communication. That's the point. But very beautifully explained. यार क्या खूबसूरत तरीके से बात की है लड़के ने, छा गया यार। And what a beautiful guy he is. He's very pretty. I like him. या और ये मतलब But he's a gentleman. He looks very handsome.
एंड इसका सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बहुत कुछ सीखने के भी आपने जैसे बात की कि मतलब बहुत कुछ सीखने के हवाले से है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, हम भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह से वो एक तो उसकी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग है, एंड जब उसने वीडियो बना रही थी वो जो दरमियान में एक क्लिप उन्होंने ऐड किया, यार ये चीज़ ऐसे ऐसे हो तो मैं इसको भी, तो ये चीज़ें अभी ये चीज़ ऐसी है कि आपको बता रहे हैं कि यार जो एक फॉर्मल ट्रेंड चला आ रहा है ना, क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो एक चीज़ हो गया, अब आप जाने नहीं, आप कर सकते हो यार, आप चेंज कर सकते हो, इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उसको साथ दरमियान में एडजस्ट कर सकते हैं। बात वही है, अगर आपकी बात पते की है ना, तो आप जिस तरह मर्जी बैठ के करें, आपको लोग सुनेंगे। और उन्होंने बातें बहुत अच्छी की, और खास तौर पे उन्होंने जो एग्जांपल दी ना फायरवर्क्स की, यस चाइना इज डोमिनेटिंग एंड चाइना वुड नॉट वांट एनीवन, चुपके से किसी को फील भी नहीं हो इस खित्ते में चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अदर इट इज इंडिया और एनी अदर कंट्री कि वो उनकी जो डोमिनेंस है, हेजमनी जो उन्होंने अपनी क्रिएट की हुई है, डोमिनेंस को वो कोई रोके। एंड चाइना हैज डन वेरी फाइन, उन्होंने हार्ड वर्क की है। एंड अच्छा, वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम चाइना टू, वी हैव वेरी मच एग्जाम्पलरी कंट्रीज हियर। जापान है हमारे पास एशिया में, वी हैव सिंगापुर, वी हैव इंडिया, वी हैव चाइना, बट स्टिल वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। सर हमारी आदत जो है ना, हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारी आदत बन चुकी है कि हमें पका पकाया खाना है, तो हमें डॉलर्स आते रहे, ठीक है, अब डॉलर्स रुके हैं तो हमारी बैंड बची हुई है। तो आई गेस दिस इज द टाइम जहाँ पाकिस्तान को भी एक डायरेक्शन की जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, और इस ये टाइम है कि हम लोग अगर अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकलेंगे तो होगा ये मामला। We need stability. एग्जैक्टली, दिस इज द सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ग्रोथ, उसके साथ ही सारी चीजें। अदरवाइज जो अब तक एक्सपेरिमेंट जिस तरह से थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ किए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि चीजें बेहतर होंगी और वर्ष की जानिब जाएंगी। आपने हर इदारे को, अभी क्रिकेट की बात करें, क्या बड़ा पॉलिटिसाइज, मतलब आपका वजीर खेल ही चीफ सेलेक्टर है। That's what's going on in this country. इस दुआ के साथ कि इस मुल्क के हालात बदलें। और मैं अपोलोजाइज करता हूँ सबसे कि यार आपको मेरी ऐसी आवाज़ सुननी पड़ी। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो हम दोनों को ज़रूर दीजिए, ताकि हम बेहतर कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, और सीखने का ये अमल जारी रहे। इन बातों के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।